Hello and welcome to all the viewers of RCI E channel. So for today's teleconferencing, we have with us Mr. Vijay Gulati, Senior Consultant, Prosthetist and Orthotist, who will be sharing his expertise and experience with us over the topic for today. Welcome to our studio. Thank you. And the topic for the teleconferencing for today is assessment of mobility aids and rehabilitation aids. So I would like all the viewers who to tune into to a channel for further information about the topic. So let me start with the topic assessment of mobility and rehabilitation aids. In this topic, we have three important words for this: mobility, rehabilitation, and aids. So first take mobility as a word. What is mobility? It's the ability to move or be moved freely and easily. Now secondly, we come into rehabilitation. It is a treatment designed to facilitate the process of recovery from injury, illness, etc. to a normal condition. And thirdly, to the word aid. It's support or help that we provide or that is being provided. So let's talk to Mr. Vijay Gulati, our panel guest, more about the topic. So what is mobility and rehabilitation aids? As you mentioned that mobility is the movement. Certainly, everyone we want to move. We want that we should means walk freely or comfortably. But there are some problems, like sometimes someone has injury or sometimes it has got some accidental or some due to some disease. There is some inability to walk. May be restricted, may be completely restricted, may be completely failed. These are the different conditions of the different persons as per the conditions of their individuals. So mobility is first thing that yes, everyone wants a mobility, and mobility is only possible when both our legs are able to take a body weight, because on each step we transfer our weight from one leg to the other leg, then reciprocally we keep on changing our weight from one leg to the other leg. That is our walking procedure. We walk accordingly like this. So if any one of the leg, part of the leg, or wherever it is, some inability is occurred due to any reason I have told you, and we'll discuss on this inabilities also, the reasons also, that will why there are some inabilities for that. So in that case, the person needs some support. That rehabilitation, you said, the rehabilitation that we should rehabilitate them to bring to the normal position. If not possibly 100%, then as much as possible. कितना हो सकता है वो सब उतना maximum लाने के लिए, that we come to the near to the normal position. For that we need some support, and those supports are aids that we need to give them. That aid is to be used. Sometimes one aid, sometimes the combination of two aids, sometimes some different type of the aids altogether. So all these things are depending on the individual's condition. So during that condition, that the assessment is required for the condition of the person, assessment of the aids, the performance, and then how much can we gain from the clubbing these two things, or to match their ability and the capability of the person. So these are the things that we have to discuss in today's discussion. So mobility aids, we have it now. Mobility means it's very clear that both the legs should be able to bear the weight. दोनों टांगों को एक साथ में बारी बारी से weight लेने के लिए. One thing, we can be balanced on both the legs if feet are flat. Sometimes in some of the conditions there is some, like if we say neurological disorder, cerebral palsy, or in that case there's a TA tightness, or there is a, because of stroke or some heavy varices, there is a foot drop. So foot drop is also, that means the foot will drag. Once we person will start walking, the dragging will be there. So we have to check with the help of aid. We have to rehabilitate, and we have to give them aid so that the dragging should be avoided. Then only the person will be able to walk as normal as other people also.
Similarly, for the cerebral palsy, if we are talking about, then TA will be tight. TA tight means there won't be the heel on the ground. If heel is not on the ground, means balance is very difficult. It is not possible to balance the uh, whole body on the toes. It's very difficult. So whole foot, complete foot should be flat on the ground. That is also the correct condition. Means we have to consider the normal condition first. So each person, those who are walking, we are walking with the normal conditions, means our condition of the legs, that is normal, very much normal. So इसके साथ साथ हम लोगों को then we have to go for this. Then why a person need an aid, mobility or rehabilitation aid? Why a person need? There are certain causes. So we can have a first slide that you can see that why a person needs the mobility and rehab aids, rehabilitation aids. So there are common causes. It's very clear now. You can see that fracture of lower limb. Lower limb means if there's a fracture in the tibial level, or it's in the femur level, or it's an ankle, any part below the hip, if there is any fracture. So if fractured part is there, then it is being taken care by the doctors by providing some plaster or some operating and providing some nail, but the person still need to get some support so that the person is not allowed to put complete weight on the affected leg. So to avoid that weight, the support of the any walking support, which are the different type of the walking supports, after the assessment of the person, again that has to be decided what kind of the support the person can use. In that assessment, one has to assess the age of the patient and the severity of the injury, and then height and body weight of the person. So these are the things that which has to be considered for the assessment, and then accordingly that we have to consider the rehabilitation or the aids which are capable to match the requirement of the individual person. That has to be considered. That is the one part. Another is old age. Old age means everyone has to pass through that old age. Sometimes old people, they need some little support because the weakness or the naturally weakness जो anatomically और हमारी जो physiological जो conditions हैं सर means not strong as we are in the young stage. So we need some support so that we can keep our life walking with some support, maybe with a stick, maybe with a walker also, depending again on that person to person, body weight of the person, walking area where the person is walking. These are the things that we have to consider. So then weakness of the lower limb. Lower limb weakness means maybe because of any reason, maybe because of their disease, or maybe some say injury. So there may be some reason of it. Then if there's any weakness, then definitely one has to use some walking support that is needed, and different kind of the walking supports we'll discuss later. Then there is another condition which is paraplegic. Paraplegic is mostly it is traumatic, because if there is any injury on the spinal cord in the lumbar region, so that is the means that causes paraplegia. Paraplegia means both the legs are, there is no sensation, and because of the lack of the our nervous system, so the legs, the person is not able to move them or withstand the body weight when standing or walking. So in that case also we need some orthotic appliances along with the mobility aid also, because combination has to be used with that. So that is the condition where till that person has to be used. Because here, if earlier we were talking about the fracture, means fracture may heal within a 6 month, 8 month, 1 year, or say 1.5 year, depending on individuals, and that support is needed only for that period, not for a long period. Whereas a paraplegic is means they have to use for a very long time, because the recovery in paraplegic is very poor and is not up to the 100%. There will be some deficiency even after a few years also. So the person may have to use for a long time. So these are the things that we have to consider while prescribing the orthotic appliances and prescribing the mobility aid as well.
because the mobility aid should be strong enough to continue for a few years as well. So another is the very common cause, polio, post-polio residual paralysis, that is also there. So in that case also there is a permanent disability. That is, the permanent disability means we need to give them some appliances to support the leg, weak leg or affected leg, and then we need to give if possible, if required, then we have to give them some mobility aid like stick or crutch or elbow crutch. Different type of things are available. And in case the polio, there are the cases there both the legs are affected and very badly affected and cannot be treated with an orthotic appliances or with any walker. So in that case means either we have to give a wheelchair for the short distances or nearby to the house movement. The mobility will be with the wheelchair or some sort of moving vehicle. There the lower carts are also available depending on the conditions where the person lives. And then for long distances the person may have to use a tricycle or a motorized tricycle, manual tricycle or a motorized tricycle, or sometime nowadays scooters and cars are also available. Scooter with the sidecar or side wheels, there are scooters available in this also. So these are the different type of the mobility aid we will be talking in later on. And there is another reason, that is the neurological disorder that I have told you, that the cerebral palsy or some other just stroke, or maybe with the brain paralysis or brain stroke is there. So in that case also person loses the control on the lower limbs. In that case also we need to support the lower limb, because as in the beginning we have discussed that for walking we need both the legs as near as possible the normal legs. So that's what we need to do for the neurological disorder person. And third one is another, that permanent disability, is that the amputation. If the person has lost the lower limb, then person need an artificial leg, and if the leg is, the level of the amputation is such that one has to use the extra support, then one stick or elbow crutch has to be used along with the artificial leg, so that mobility should be as normal as possible. So these are the common causes that we have discussed about this. So the basic common causes so had discussed with us is CP, paraplegia, fractures, old age. All these may lead to a person to use a mobility and rehabilitation aid, and it goes hand in hand. Mobility and rehabilitation goes hand in hand, as per se. Okay, so what all is the assessment for mobility and rehabilitation aids for different causes are different or is same? No, it's a different. Means the thing is, first of all, that we have to see the capability of the person. Means whatever the person has lost, we have to assess that also, the percentage of the loss, and what kind of the ability the person has lost. Then what can we do that? What can we provide to the person, and what the person can be achieved? Means that is also very important. That if a person is whether he will be able to use the axilla crutch, or will be used to walker, or will be a stick will be sufficient, or with the elbow crutch will be sufficient. All these things has to be decided on the assessment basis, that the person's age, severity of the disability, and then weight of the person, and the duration of the usage of the appliances or with the mobility aid that person has to use. That we can estimate that maybe used for the 6 months, maybe for a year, maybe for more than a year, or maybe for a longer period also as well. So we have to plan accordingly. These are the things that we have to assess with the person, and then accordingly we have to match the requirement of the person with the supply of the aids. What kind of the mobility aid will be suitable, and all these things we can try with the person. And then again, the capability of the person may be capable to use a lesser support, and maybe capable of using more supports. I mean to say less and more, that a person may be able to walk with a stick, or may be able to stick is a very minimum support. Stick is a minimum support with one tip.
There are different type of sticks which has got one tip, which has got 3 tips, tripod or tetrapod with the 4 tips are there. Means 4 tips means giving more stability, giving more base for the person to put weight on it, and maybe providing more stability. With the one stick, it is lesser stability. Similarly, if more stability is required, then one person may be able to use the walker which has got the 4 different pods in a very wide area, so that the whole body weight can be borne on the 4 points, that are walker's points. So with that also, sometimes the patients, they walk with the different type of the gates, the 1 point gate, 2 point gate, 3 point gate, or 4 point gate, or a swing through gate. These are the different gates the person uses for the walking with the disability, not the normal. Normally we walk with the step to step, 1 by 1 step, and we walk with the normal gait. That is the normal gait, we walk with that. We don't walk with the jumping, or we don't go for the 3 point or 2 point gate. 2 point gate is there, that we walk 1 2 1 2 1 2. So this is the gait that we normally use to walk it. So there are the different type of the walking aids. If we see the slide, that you can see the different type of the walking sticks are available, then auxiliary crutches are available, then elbow crutches, and then anterior rollator or the posterior rollator. Will show the pictures of these appliances. Then wheelchairs, different type of the wheelchairs, or then power wheelchair, which is operated with the motor battery, and tricycles, different type of the tricycles which are manual as well as the motorized. Then we have got the artificial lower limb in the rehabilitation aid, that is the lower limbs of the different level of the amputation, that each person has got the different level of amputation. Then orthotic aids, which are the support to the weak part of the body, like I mentioned, the paraplegic or the polio, post polio residual paralysis persons are there. They are using this type of the orthotic appliances, or maybe for the cerebral palsy children we are using these lower limb orthotics appliances, and they may need, along with this, may need some other mobility aids. तो इस सब चीज़ों का combination हम बना के then we have to work on it. So assessment is very important for the person first. उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उनको वेट के हिसाब से पूरा देखने के बाद देन उनके लिए क्या चीज़ सूटेबल होगी, उसकी असेसमेंट भी करनी ज़रूरी है. नाउ इफ़ वी गो टू वी डिसाइड द अप्लाइंसेस, उसका असेसमेंट भी करेंगे. असेसमेंट के साथ में देन वी हैव टू डिसाइड, जैसा अभी क्रचेस हैं उनके दे हैव द डिफरेंट लेवल, मीन्स हाइट, दैट वी हैव टू सी द कितनी हाइट इसको पेशेंट को क्रच यूज़ करने के लिए चाहिए और कितनी क्रच की हाइट होनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें एडजस्टेबल होती हैं. देन वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन वी हैव टू डू दैट. So some of the things are very common, that wheelchair and all that. Wheelchair also we have got a different sizes, like बच्चों के लिए we need a smaller wheelchair, or sometimes we'll talk about that also. These are the things. So the basic appliances of mobility aids used are sticks, crutches, rollators, wheelchairs, and tricycles. So these are the appliances for the mobility. And the rehabilitation aids, as per sir discussed, prosthetic devices, orthotic devices, calipers, splints, etc. So assessment, let's start with the assessment of the sticks. As firstly we discussed, let's start with the stick. Yes. What are the assessments? We have got different type of the walking sticks which are being used. You see, nowadays, because the time has been changed, now advancement is there in each and every field. In our field also there's an advancement. Earlier, if you remember, there are wooden sticks are available in this U-shape handle, and with the stick giving a support to the old people, they used to use it. Or sometimes if you have seen somewhere in the villages, they used to use some bamboo stick to just have a support, because they have got inability in walking with due to some lack of problem, or there's a problem in the lower limbs, so they use some support. So we have got a different type of sticks. You can see the slide that we have got different type of the sticks with the single tip, with the different type of the handles, and another we have got the 3 points stick, and we have got the 4 point sticks.
which has got the 4 tips at the bottom and there's another 3 tips in the bottom, means the person has got the more stability. Means if one person is putting on a weight on the stick, means that has got the more stability patient will have. So the height, again I told you that we have to adjust the height. इसकी height को भी उसी की height के हिसाब से, because हम सब की height में अलग अलग है, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई छोटे कद का है, कोई बड़े कद का है. So according to our height, we need to adjust. It has got a stick. You can see these are the sticks are adjustable. So we have to keep in the stick should be in the appropriate height. Appropriate height will be the elbow should not be flexed up to the 90 degree. It should be somewhere in 30 degree, or say if we count it another way, it is 150 degree. That is that. So there should be some inclination of the elbow, not a completely 90 degree or not a completely straight. So it should be the inclination up to 30 degree inclination, so that ki your proper weight, the जितना हमारा बॉडी का वेट है वो प्रॉपरली स्टिक के ऊपर आए और बहुत ज़्यादा भी उसके ऊपर नहीं आए. कंफर्टेबल स्टिक की हाइट और कंफर्टेबल हैंड पोजीशन, हमारी हाथ की पोजीशन, बिकॉज ऑल स्टिक्स, जो भी स्टिक्स हैं या क्रचेज हैं या एल्बो क्रचेज हैं, मोस्ट ऑफ द वेट इज़ बीइंग बोर्न बाय द hand only. Not if there's an axilla crutch, it doesn't mean that weight is on the axilla. Axillar crutches that extended up to the axilla, but not to bear the body weight on the axilla. It is just an support in axilla, not a body weight on that. Weight will be on the hand itself. Similarly, that elbow crutch is there, then elbow crutch means extended up to the elbow, just below the elbow, but the weight is being borne on the hand grip only. So main weight will be on the hand grip, and advantages of the disadvantages of the different aids are there. Like if we are talking about the stick, means single tip stick, means if you need to leave the stick, means you need some support to leave it with the दीवार के साथ में, किसी चेयर के साथ में, you have to get some support to keep it. Whereas the stick with the 3 points or with the 4 points means you can leave the stick wherever it is, and you can feel free with your hand, you can do work with your hand, then again you can pick up the stick as well, because it has got a stable base, it will not fall down. तो खड़ी रहेगी स्टिक आपके पास में, आप खड़े हैं, काम कर रहे हैं, then it's it. Similarly, elbow crutches there that you can get your hand free, because it is always hanged with your elbow and you can get your hand free, do your work, sign paper, do something, pick up something, then again you can pick up the stick and move forward. So these are the different advantages and disadvantages of the different type of the crutches, and there are different type of the say adapted crutches. I'll show you the slides also. The next slide we can see that the person, the child walking with a stick, even though she's walking with a very height, I told you that 90 degree is not appropriate position of the elbow if some weight is being borne on that. So but the child is habitual of using this. In this slide we can see the video clipping also of this this slide. You can see that the child is walking not the 30 degree, it is little bit more than 30 degree, not 90 even, but still little bit more. But she is walking with the stick, having another orthosis on the hip also, that is a swash brace she is using, that is another hip support. That support is only to meant to keep the both the knees apart, because otherwise she is having a scissoring gait. To avoid the scissoring gait, she has been fitted with the swash brace. So we are keeping her legs apart, not touching each other. There is a sufficient gap in between the legs. You can see that otherwise without the brace she was not able to. But still the hip is not so stable. That's why she is using a 4-point stick, so that she need more stability. Her health condition is also not so good. She is not so healthy. But still she is managing. It's very good. That's why I told you that it depends on child to child, depends on person to person, किस तरह से कितना कोई ऑपरेट करता है या उसको मैनेज करता है. शी इज़ यूजिंग एन एंकल फुट ऑर्थोसिस ऑल्सो एज वेल, बिकॉज द फुट हैज़ टू बी केप्ट ऑन अ, शी इज़ अ CP child, so she has to use the foot on the ground flat, so that the weight should be stabilized. So these are the things that we need to use it. So this is the thing that you can see that. So stick, also the term stick, the term used is cane for this. Yeah.
Earlier, we used to know the sticks and canes are used for old age patients or old age individuals. Nowadays, with the advancement of 1 point to 3 point, that's tripod, it's a great use. It's in a great use for the patients with common problems like post polio paralysis, paraplegia, and etc. So we'll continue our talk with Mr. V. Gulati. So it's time for a short break. We'll be back after a break. Thank you. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. Never stops us from dreaming. Harta hai wo, har mane jo. We are what we believe in. Hum dharti ko ambar se mila de. Hum ud sakte. Hum chule sitaron ko. आशा के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. Welcome back to all the viewers. So today we have with us Mr. Vijay Gulati, Senior Consultant, Prosthetics and Orthotics.
So till now we have discussed about the topic for today is assessment for mobility and rehabilitation aids. So till now we have discussed about the different aids provided to the individuals or the patients. There are sticks, crutches, walking rollators, and for in the rehabilitation aids we have prosthetics, orthotics devices, splints, calipers. So we were discussing about the cane, that's also termed as stick. So some more information about the sticks. Yeah, sticks. You have seen the child using the tetrapod stick for mobility, because as we discussed in the beginning that for mobility we need both the legs to bear the weight simultaneously, one by one. एक दफ़ा left पे, दूसरी दफ़ा right पे. But the child was not able to bear the weight on both the legs properly, so that the child needed that support for both the legs. When weight is on the left side, तो left side की support भी चाहिए उसको. जब when weight is on the right side, then she needed a support on the right side as well. So दोनों side उसको support लेके she was able to manage, and she has improved a lot, because we always look forward that the person who is using the mobility aid is going to improve the mobility, and with the time of the usage of the mobility aid, the aid should be reduced as much as possible. कितना कम कर सकते हैं उसको, कितना मिनिमम एड के ऊपर ला सकते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि मैक्सिमम एड शुड बी यूज्ड. कई दफ़ा कई एड्स की देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो बाई फॉर यूजिंग दिस. नाउ इफ़ यू हैव सीन द चाइल्ड इज़ वॉकिंग विद अ वेरी वाइड, मीन्स स्टिक्स भी हैं साथ में, उसका स्टिक भी है, सो मीन्स द चाइल्ड नीड मोर स्पेस टू वॉक. कहीं अगर क्राउडेड एरिया में जाएंगे तो शी विल नॉट बी एबल टू वॉक, उसको चलने में मुश्किल होगी, बिकॉज शी नीड्स मोर स्पेस अपनी दोनों स्टिक को रखने के लिए. ये ऑल दीज थिंग्स दे नीड इट. सिमिलरली इफ समवन इज यूजिंग सम अदर टाइप ऑफ एड, लाइक यू कैन सी वॉकर यूज़ कर रहे हैं, तो वो अब इवन दिस चाइल्ड स्टेयर पे चढ़ना मुश्किल होगा इनके लिए, बिकॉज स्टेयर मीन्स वी हैव टू स्टेप बाय स्टेप अप करना है. तो और रैम्प के ऊपर यस शी कैन यूज़ रैम्प पे चलना थोड़ा सा उसको विद द प्रैक्टिस. Now here again it comes that to make a person the use of the mobility aid means we have to give them some training, or they need some practice as well, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ की हम लोगों को आदत नहीं होती है. वी आर नॉट यूज टू इसके लिए कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है. सो वी नीड सम ट्रेनिंग, थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा. प्लस द ज़रूरत होती है, जो ज़रूरत अपने आप सिखा भी देती है. दैट वी नीड, जैसे ही पैर में इंजरी होती है तो डेफिनेटली पर्सन लर्न्स हाउ टू वॉक विद अ क्रच. तो पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, नॉट एबल टू बियर वेट, और पैर में चोट लगी हुई है समटाइम्स, तो भी हम उसके ऊपर वेट नहीं लेना चाहते. देन वी नीड टू लर्न दैट हाउ टू ट्रांसफ़र अ वेट फ्रॉम वन लेग टू द अदर लेग. तो एक क्रच की यूज़ करना चाहिए, दोनों साइड पे क्रच इस्तेमाल करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट इफ़ अ पर्सन इज़ मोर कॉन्फिडेंट, अच्छा कॉन्फिडेंट है, उसको यूज़ करने के लिए कैन बी यूज विद अ वन क्रच एज वेल. अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है तो बोथ द साइड्स. इसके लिए सिर्फ क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की बात है, मीन्स उसको ये होना चाहिए कि मैं गिरूंगा नहीं. फर्स्ट थिंग जो पेशेंट के अंदर आती है, ये यूज़र के साथ में आती है कि मैं गिरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं गिरना चाहता. सो ना गिरे, इसके लिए वी नीड सम सपोर्ट, कोई ना कोई सपोर्ट हाथ में, चाहे क्रच लेनी पड़े या वॉकर लेनी पड़े, सो दैट कि मोबिलिटी के टाइम में गिरना ठीक नहीं है. गिरना किसी को भी पसंद नहीं है, कोई गिरना चाहेगा भी नहीं, तो गिरना भी नहीं चाहिए. इसके लिए क्या है, वी नीड दिस ऑल एड्स एंड अप्लायंस. जो भी हम अभी मोबिलिटी एड्स की बात कर रहे हैं, इनके लिए बात कर रहे थे. तो ये अभी आपने देखा कि स्टिक्स के बारे में बात करें. वी गॉट द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टिक्स. ऑल हैज़ गॉट द एडजस्टमेंट ऑफ द हाइट अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द चाइल्ड और हाइट ऑफ द एडल्ट. सो दीज आर टू बी एडजस्टेड. प्लस द स्ट्रेंथ वाइज कितनी हैवी, कितनी मजबूत, वो भी देखनी पड़ेगी. बिकॉज बच्चों के लिए तो ठीक है, इफ देयर इज अ हैवी पेशेंट, द पर्सन इज़ वेरी हैवी, सो वी नीड टू गिव अ some solid support, means एक strong enough to bear the body weight of the person, because ultimately the person is going to put a weight on it. उसके ऊपर वजन डालेंगे तो ऐसा ना हो कि वो मुड़ जाए, टूट जाए, so will cause another accident. So इसके लिए क्या है, and for this you have seen in the sticks there are rubber tips. नीचे आप देखेंगे एक रबर के टिप्स लगे हुए हैं, because it's just to avoid the slipping. नीचे ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर स्लिप नहीं कर जाए. जहाँ पे पेशेंट ने रखा है उसको शुड स्टे देयर फर्मली, सो दैट कि वो स्लिप नहीं करे. उसके ऊपर स्लिप करने से फिर एक्सीडेंट हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए, एंड दीज आर द कंज्यूमेबल थिंग्स. जो नीचे टिप है रबर का है, जैसे जैसे यूज़ करेंगे इसकी टिप
जो है घिस भी सकती है, ख़राब हो सकती है. इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड. ख़राब हो गई तो देन वन हैज़ टू गो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस रबर टेप. कई दफ़ा स्टिक भी यूज़ करते करते इट्स नॉट ए लाइफ टर्म के लिए नहीं रहती कि पूरी उम्र चलेगी. अगर इफ़ इट हैज़ टू बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म, as I told you, there are the some cases which has to use, which people they have to use for a long term, जिनको permanent disability है, तो they need for long term. तो उनके लिए क्या है कि they may require to change the appliances or the crutch or the stick as and when required. जैसा जैसा अगर वो ख़राब हो जाती है then they have to, because depending on the quality or depending on the strength of the crutch or stick, वो हो सकता है कि वो बदलनी भी पड़े, ख़राब हो जाए. अच्छी होगी तो थोड़ा ज़्यादा चल जाएगी, थोड़ी क्वालिटी में थोड़ी हल्की होगी तो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाएगी. सो दीज आर द थिंग्स इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड और विजिल होनी चाहिए उसके ऊपर. खुद ही यूज़र अपने आप ही उसको यूज़ करते देखते हैं कि कैसे ख़राब हो गई या कुछ है, दे कैन अरेंज फॉर अनदर वन ऑल्सो. तो ये सब चीज़ें आपने स्टिक्स के बारे में देखी. नाउ विल टॉक अबाउट द, वी कैन सी द अनदर क्रचेज ऑल्सो एज वेल एज. देर आर auxiliary crutches. Auxiliary crutches I told you which is extended up to the axilla. You can see the axilla के ऊपर तक extended है, but the weight is to be borne with the hand only. हाथ के ऊपर ही वजन आएगा, axilla के ऊपर weight नहीं आता. Axilla is a supporting part only. It keeps the crutch in a position. अपनी पोजीशन पे रखने के लिए, ताकि जो क्रच है वो इधर उधर खिसकेगी नहीं. आपकी बाजू के नीचे दबी है, एक्सिला में दबी हुई है, तो वो इधर उधर खिसकेगी नहीं, सो दैट कि आपका बॉडी वेट. और स्टिक को स्टेबल करना पड़ेगा, बिकॉज लेग्स आर नॉट स्टेबल. तभी स्टिक को यूज़ करें, तभी क्रच को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आवर लेग्स आर नॉट स्टेबल. पर्सनस लेग्स आर नॉट स्टेबल, सो वी नीड टू स्टेबलाइज द लेग एज वेल एज द एक्सिला क्रच ऑल्सो. क्रच को अगर स्टेबल करना, नाउ इन दिस केस यू कैन सी द पर्सन हैज़ modified the axilla crutch. It is some sort of different type of the axilla crutch he is holding in on the left side. You can see हाथ में दिखा रहे हैं वो, उसमें अलग तरह से क्रच है. Now you can see the video. Yes, how he is walking with this. He is swing through. He is just swinging his body because both the legs are weak. You can see that both the legs are weak. Even right is more weaker than the left one. So he is able to put a weight on the left side, but still लॉकिंग द नी विद द हाइपर एक्सटेंशन एट द नी, बिकॉज नी को थोड़ा सा पीछे चला जाता है, तो उसका लेफ्ट में आपको फुट ड्रॉप भी बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है. ही हैज़ गॉट द फुट ड्रॉप ऑन द लेफ्ट साइड, बट बोथ द साइड्स आर वीक, बट ही इज़ एबल टू मैनेज. यू कैन सी हिज वेट ऑन द फोटोग्राफ्स एंड यू कैन सी दिस वेट इज़ टू मच, एंड ही इज़ यूजिंग दिस क्रच फॉर लॉन्ग टाइम. एंड इसका जो फाइनली जो इसने किया है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप का इसको डिज़ाइन करवाया है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाई है, ताकि एक पूरा बॉडी वेट इसका ले सके. एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज इनसे जब पूछा गया कि आप इस तरह से क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ही फील्स कि सामने से हाथ के आगे बिल्कुल फ्री है. ही इज़ फ्री टू डू द वर्क. कुछ भी काम करना चाहें ये हाथ से फ्री कर सकते हैं इनको. तो इसके लिए आप यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ द, नाउ दिस इज द एक्सिला क्रच. ही हैज़ गॉट एक्सिलरी सपोर्ट नीचे उसके, बट वेट इज़ ऑन द हैंड्स ओनली. हाथ के ऊपर वजन है पूरा इसके साथ में, और कहीं भी वेट नहीं जा रहा है इसका. सो इट्स गुड दैट sometimes individuals they design and develop, or they say कि they make their own उसके requirement के हिसाब से modify कर लेते हैं crutches को. तो ये इस तरह से जो auxiliary support crutches हैं that can be used. Sir, I have a question, sir. हाँ जी. In respect of the cane, sir, that we discussed earlier, it's we have saw it in a bilateral patient. If it's a unilateral patient, Yes. whether it is a criteria patient should use the cane in a affected side only, or in the Good. Other or contraindicated Yes, side. that is there. Usually on the affected side, because once the person is putting a weight, but sometimes the person is habitual of putting a weight on the other side. So उसके साथ में क्या होता है कि they may change from normal to the affected side also. दोनों तरफ try कर सकते हैं. This is usually the pattern which develop द इंडिविजुअल. अपना उनका पैटर्न जो डेवलप हो जाता है उसके साथ से वो उसको सपोर्ट कर लेते हैं. बट सर्टेनली दे नीड, इफ़ वेट इज़ ऑन द नॉर्मल साइड मीन्स द पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग होल बॉडी वेट बैलेंस ऑन अ वन लेग, सो इट डजंट रिक्वायर ऑन दैट साइड. बट समटाइम्स यू मेक ए वाइडर बेस, चौड़ा बेस बनाने के लिए दे मे यूज़ ऑन द अफेक्टेड साइड, सो दैट कि दोनों तरफ उनका एक चौड़ा बेस बन जाता है. उसके लिए दे कैन यूज़. अदरवाइज ऑन दैट साइड ऑल्सो द अफेक्टेड साइड इज़ बेटर, बट डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल दैट कैन बी यूज. स्टिक हो या उसके अंदर सिंगल स्टिक हो या एल्बो क्रच हो,
कुछ भी हो उसके साथ में दे कैन यूज बोथ द साइड्स. इसके बाद में अगर आप इफ़ यू जस्ट go to the elbow crutch, if we talk about this elbow crutches. Elbow crutches are, as I told you, there are all the crutches means the weight is to be borne with the handle grip. Hand grip के ऊपर ही weight रहता है. But जो this is extended up to the elbow means to facilitate the person जो use कर रहा है उसको एक another एक facility provide कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि the person can be used to hold anything, like अगर बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको कहीं बस का हैंडल पकड़ना है या कोई ग्रिप पकड़नी है या कहीं शॉप में खड़े हैं या कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, दे नीड टू हैव देयर हैंड फ्री टू होल्ड एनी अनदर ऑब्जेक्ट. सो उनकी दे कैन लीव द हैंड but the crutch will remain with their elbow so that ki again if he wants to go back to the stick he doesn't need to find out the where is the stick, सीधा सीधा stick के ऊपर हाथ चला जाता है and they can walk again with that. But only the thing, whenever he needs a free hand he or she can just go, leave the hand, do the hold the object wherever they want, or if they want to do some on the table they are standing and they just want to sign the paper, they can sign the paper and they can do or write anything, note or whatever they want, they can do it and then later on again back to the elbow crutch के ऊपर आ सकते हैं. तो elbow crutch के अंदर weight is being borne with all the crutches, weight is being borne with the hand only. It is extended up to the elbow or up to the axilla. That is a extended support. That is the thing that we can have it. But sometimes you can see that some of the people they modify the crutches, means according to their required usage, जैसा उनको यूज़ करने के लिए अच्छा लगता होगा या जैसा भी होगा उसके हिसाब से. जैसा अभी आपने इससे पहले एक वीडियो क्लिपिंग में देखा, द पर्सन ही हैज़ से यूज्ड ए डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रच, axilla crutch. It is not a regular axillary crutch but it is a auxiliary crutch, modified auxiliary crutch. It is being modified according to his own requirement. उसके हिसाब से उन्होंने ये स्टिक बना ली है which has got a same, all adjustment will be there. So some other people, you can see the another slide as well, see the another modified stick. The person who has got on the one side picture, you can see that sticks are crutches are lying over there and the person is walking, how 4-point gait he is walking with that. This is very comfortably. The condition you have seen in the picture, both the legs are badly affected, means no chance of getting any weight on the leg if the knee is not locked. Here the knee has been locked with the help of an KFO on both the sides. दोनों तरफ ऑर्थोसिस दिया हुआ है इसको, so that कि उसके क्रच, बट इसके क्रच को एक बार फिर आप थोड़ा नज़दीक आएगा then you can see the stop, we can stop over there, then you can see that इसको नज़दीक आने के बाद now you can if you can stop the video over here, yes you can see that, see the crutch, this is not elbow crutch, it's a auxiliary crutch extended up to below the elbow but straight. The lower part is again like an axilla crutch, but the person is very comfortable with that. He is walking with this right from the birth because he has got the disability right from the birth at the age of say 5 years or 3 years. Now he has passed the graduation and then he is in the job, so he is doing good with the same rubber tips are there, and walking is, you can see, very comfortably walking. He can walk on even uneven grounds also because he doesn't have any problem with that as well. So the model is the type of auxiliary crutch with advanced elbow crutch. Yeah, this is up to the elbow. So the switching over from auxiliary crutch to the elbow crutch, is there any difficulty for the patient? Of course, maybe, because auxiliary crutch is more stable than the elbow crutch because it gives a support right from the axilla. So axilla से support आ रहा है उसको, तो उसको ज़्यादा अच्छा comfort रहता है, उसको ज़्यादा supportive रहता है. और जब elbow crutch पे आते हैं तो definitely उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं अभी elbow crutch के ऊपर हूँ. Whereas इसको vice versa करेंगे, elbow crutch वाला axilla के ऊपर बहुत comfortable हो जाता है. Elbow crutch use करने वाले को अगर axilla crutch दे दी जाए तो he is more comfortable. But usually they don't like it. Once they are habitual of using an elbow crutch, they want to walk with the elbow crutch because they feel more comfortable with that. बट द एक्जिला वाले को अगर एल्बो क्रच पे लाते हैं तो थोड़ा सा उसको टाइम चेंज ओवर के लिए रिक्वायर्ड सम टाइम, थोड़ा सा उसको बदलने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अपने आप को अकॉर्डिंगली उसको ज़रूरत पड़ सकती है उसके लिए में. तो ये सब चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट की होती हैं. So in the earlier slide we saw the crutches, it's made of aluminium and iron.
Yes. So what are all the other materials? Yeah, there that are we can use? nowadays different type of the materials. लकड़ी भी इस्तेमाल होती है. पहले लकड़ी बहुत इस्तेमाल होती थी, अब लकड़ी थोड़ी कम. बैम्बू जो अगर आप Sticks. if you just go to the villages, they make the elbow this auxiliary crutches with the strong bamboo. पकड़ते हैं नीचे से टाइट उसको टाइट कर लेते हैं. They make half of it, उसको जस्ट कट कर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हाफ कर देते हैं उसको सीधा. देन स्प्रेड करके ऊपर उसके एक एक्जिला का पैड लगा देते हैं. देन इन बिटवीन द हैंड ग्रिप के ऊपर एक हैंडल ग्रिप लगा देते हैं. सो दे मेड इट वेरी से इकोनॉमिकल और से रूरल टाइप. और CBR के साथ में कैसे हैं कम्युनिटी बेस्ड जो रिहेबिलिटेशन है उसके अंदर मीन्स दे teach how to develop the thing which is suitable and which is within from your community. आपके वहीं गांव से बैम्बू कौन सी जगह जहाँ नहीं मिलता है, सब जगह पे बैम्बू मिल जाते हैं. और बैम्बू के साथ how you can make it. And there are different designs I have seen designs of the different crutches made out of the local material available. Sometimes combination of the bamboo and the steel strip, I have seen that also. एक बैम्बू की स्टिक को नीचे लेके उसके साथ मेटालिक स्ट्रिप को ऐसे लंबा बना देते हैं और उसके ऊपर हैंडल ग्रिप लगा देते हैं. सो दे फील कि हम अपने आप ही अपनी जैसे ज़रूरत है. एंड वट एवर द मीन्स नॉट ओनली बैम्बू बट जो भी लकड़ी अवेलेबल है उस एरिए में, बिकॉज ये सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली इसको. और प्लस एक एनवायरनमेंट का हिस्सा जो एक रोल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कई जगह पे एनवायरनमेंट मीन्स जगह ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची पहाड़ के ऊपर चलना नीचे या रेत में चलना. दीज आर द डिफरेंट एरियाज वेयर द वी हैव गॉट इंडिया जो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट कंडीशंस के साथ में है इंडिया के अंदर. कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा, कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा, कहीं रेत है, कहीं पे जो ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी इलाका है ऊपर नीचे चलने का. सो डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट कंडीशंस के साथ में द वन हैज़ टू बी ट्रेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस के साथ में उनको ये ट्रेन करना पड़ता है. एंड दे हैव टू लर्न. दीज आर द ट्रेनिंग और द प्रैक्टिस सेशंस शुड बी देयर एंड इट डेवलप्स. हर एक के साथ में जो भी यूज़र होता है उसको ये चीज़ जैसे ही दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली दे यूज़ टू डेवलप इट. और अपने आप उनका इंटरनली एक इस तरह से होता है कि दे यूज़ टू डेवलप इट. तो ये दीज आर द थिंग्स विद द स्टिक्स और क्रचेस की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से. एंड वैरायटी जो मटेरियल की अगर आप बात करते हैं देयर इज अ वैरायटी ऑफ मटेरियल. हल्का भी है, भारी भी है, बट नाउअडेज कॉमनली बीइंग यूज्ड एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ, लाइट इन वेट और ड्यूरेबल भी रहता है. सो उसके लिए जो यूज़ हो रहा है अभी नाउअडेज एल्यूमिनियम इज़ वेरी मच इन द फील्ड बिकॉज इसको पानी वानी भी ख़राब नहीं करता है, रस्ट नहीं लगता है. वेराज अगर स्टील का पाइप यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी हैवी, एक रस्ट लग जाता है, कुछ टाइम के बाद में ख़राब हो जाते हैं बिकॉज उनका रस्ट लगने के बाद बिल्कुल वर्स्ट बेकार हो जाते हैं. सो इस तरह की चीज़ों के लिए वेयर एज द एडवांटेज ऑफ द स्टील इज़ ऑल्सो देयर दैट अगर लोहे का बना हुआ है टूट गया तो उसको वेल्डिंग करवाने के लिए इट्स ईजी टू गेट इट वेल्डेड. और वेयर एज एल्यूमिनियम का है उसकी वेल्डिंग ढूंढनी पड़ती है, कहीं लगाना या उसको रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए. कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ईजीली रिपेयर नहीं होती है, मुश्किल हो जाती है उसको रिपेयर करने में. और जो लकड़ी की है ऑफकोर्स कहीं भी रिपेयर हो जाती है, उसको अगर रिपेयर नहीं तो नई भी बन जाती है, इतनी कॉस्ट में तो नई बन जाती है. सो दीज आर द थिंग्स सम कॉस्ट इफेक्टेड. और नाउ इज एल्बो क्रचेस की बात करेंगे तो देयर वैरायटी ऑफ एल्बो क्रचेस. नाउ इट इज़ द मार्केट इज़ देयर, द इंटरनेशनल मार्केट इज़ देयर. वी हैव गॉट डिफरेंट वैरायटी ऑफ द एल्बो क्रचेस फ्रॉम द ओवरसीज़. एक बाहर की कंपनीज हैं, हमारे इंटरनल मैन्युफैक्चरर दे आर मैन्युफैक्चरिंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द क्रचेस. जो एल्बो क्रचेस हैं हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं, दे आर मेकिंग वेरी गुड दैट इज़ मैचिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ में मैच करके बना रहे हैं विद द लो कॉस्ट, विद द वेरी लेस कॉस्ट देन द जो मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही हैं. बट स्टिल मीन्स अवेलेबिलिटी इज़ देयर, द डिज़ाइंस आर देयर. ओनली द थिंग दैट वन हाउ द पर्सन, हाउ द यूज़र कैन बी अडॉप्टेड विद द पर्टिकुलर थिंग, उनके असेसमेंट के ऊपर प्लस उनके अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. So according to the requirement, patient gets whatever he needs, whether it's sticks, elbow crutches, axillary crutches. So what are all the other mobility aids that can be used for the patients? Yes, I mentioned you that usually in the villages people they used to use like a single bamboo stick for the walking, and in the different styles they walk with that. With the next slide I will show you that how do they walk with that. See the video clipping of this self-made support. They have made it themselves only. You see that the one leg is very much affected with the polio and he has got only one leg which is sound, but
as I mentioned in the beginning, that we need two legs to walk. Means one, the body weight is being transferred from one side to the other side. The person is now, see, he's walking on the same side. Affected leg, he is not touching on that. अभी आपने पूछा था कि कौन सी साइड पे इस्तेमाल करनी चाहिए वो, but now he has seen, you see that he is crossed. उसने अपनी बॉडी का बैलेंस इस तरह से डेवलप किया है, सो ही इज ऑन द राइट साइड, ऑन द नॉर्मल साइड, नॉट ऑन द अफेक्टेड साइड. पूरा बॉडी वेट उसका एक बारी स्टिक के ऊपर आता है. जब व्हेन ही इज लिफ्टिंग हिज लेग, जो नॉर्मल लेग है लिफ्ट करके आगे ले रहे हैं, तो पूरा बॉडी वेट उसका उस स्टिक और हाथ, स्टिक के ऊपर कहाँ आ रहा है, हाथ पे आ रहा है. अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कोई भी क्रच है उनका वेट तो हाथ पे ही आता है, नॉट ऑन द एक्सिला, नॉट ऑन द एल्बो, ये सब वेट हाथ पे आता है. सो ही इज गेटिंग वेट ऑन द हैंड्स, दोनों हाथों के ऊपर बराबर वेट ले रहा है, और एक डंडे के थ्रू जमीन पे वेट आ जाता है, पूरा बॉडी वेट उसका आता है उसके ऊपर. एंड दिस बैम्बू इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर द बॉडी वेट ऑफ 70-80-90 kg, जितना भी इसका बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये इसको ले सकता है. तो ये इसका एक वॉकिंग पैटर्न देखने आप इस तरह से बना हुआ है ना. इसके आने के बाद, हमारे पास आने के बाद में व्हाट वी डिड, सबसे पहले तो इसकी जो अफेक्टेड लेग है उसको हमने असेस किया. असेसमेंट करने के बाद में हमने ये देखा कि यस, लेग तो वीक हो गई है, उसकी पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस है, उसको पैरालिसिस है, ही कैन नॉट बी. बट वी वांटेड दैट वेट इसका एक तो नॉर्मल लेग पे आ ही रहा है, देयर शुड बी अ वेट ऑन द अफेक्टेड साइड ऑल्सो एज वेल, नॉट ऑन द डंडा इटसेल्फ, नॉट ऑन द बैम्बू इटसेल्फ. सो वी ट्राई टू मेक एन ऑर्थोसिस, एक KFO बनाया गया इसके लिए, उसको KFO के साथ फिट किया गया. देन वी फाउंड इट दैट ही इज वॉकिंग with more comfortable, because plus the advantage is that उसका जो हाथ थे, दोनों हाथ एंगेज थे इसके साथ में, यू मस्ट हैव सीन दैट दोनों हाथों से उसने स्टिक को पकड़ा हुआ था. ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड एनी अदर थिंग, कुछ भी पकड़ नहीं सकता था हाथ में. सो उसको वो एक हाथ भी फ्री हो गया, एक लेग के ऊपर चलना शुरू किया, प्लस विद सिंगल, स्टिल ही वॉज यूजिंग द सेम डंडा with that one hand, not with the two hand, with one hand, but weight was on simultaneously, once on left, once on another time on the right. So he was transferring weight from left to right this way, and having a very close to the normal gait with the help of this danda. But we are sure that he will be able to walk with the single crutch, single stick also. It's also a pattern that person is ferrying in a boat. It's similar to that also. Yes, that's it. So we'll continue our chat with Mr. V. Gulati. For our viewers, for any suggestions or queries, they can call on our toll-free number, that is 1800-11-208, or our landline number 011-265-11609. On our website, that is www.nic.in. Thank you. We'll be back after a short break.
के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. Welcome back to all our viewers to our channel Navshika. So today we have Mr. VK Gulati, Senior Consultant Prosthetics Orthotics. So the topic for today is Mobility and Rehabilitation Aids Assessment. So till now we have discussed about the different types of devices, mobility devices, aids, such as rollators, canes, crutches. Canes, sticks, same. Crutches, we are on crutches, that is axillary, elbow, and there are self-made crutches that an individual has designed for himself, that we saw in the last slide. So if we talk about crutches, what are all designs we can see? So As I told you that the basic design or the principle of the design is the same, that weight should be borne on the hands and there should be support either at the axilla or at the elbow or wherever the person is convenient in between the hand, axilla and the elbow. So that is, you have seen the axillary support as well. You have seen the elbow crutch, elbow support, and one person who was using the modified auxiliary crutch, जो उसके below the elbow थी, not going up to the axilla but up to the just below the elbow, but he was on the elbow. Weight is always on the hand grip itself, because we have to give the weight. The person has to bear the weight on the hands itself. The person who was using the self-made stick, that was there also, you have seen he was putting a weight on both the hands. He was not putting a weight on the affected side. Affected side was just hanging with the patient. It was not with the touch of the ground or touch of anywhere. So उसको पूरा का पूरा body weight एक stick के ऊपर with both the hands, because body weight is, of course there is a body weight. Slip नहीं करना चाहिए और गिरना नहीं चाहिए, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं. कोई भी mobility aid or a walking, no one would like to fall down. कोई भी नहीं चाहेगा कि गिर जाए, even with the walking or with the mobility aid itself. So mobility aid should be strong, sturdy, and should be so effective that supports the person who need it. तो जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ में वो उसका पूरा सपोर्ट करे. दिस इज़ दैट टोटली, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द यूज़र एज वेल एज द असेसमेंट ऑफ द मोबिलिटी एड, एंड उसका इफेक्टेड कितना है, उसको क्या रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, देन एड अकॉर्डिंगली एड डिसाइड करने के बाद में देन वी कैन डिसाइड इट किस तरह की क्रच या स्टिक वन कैन यूज़ कंफर्टेबली
sometimes the ability, जैसा हम बात कर रहे थे कि ability of the person, because some of the people they are able to walk with the elbow crutch, with the small support, with the stick as well, but कुछ लोगों को stability ज़्यादा चाहिए because they are scared, they are not so confident कि वो गिरेंगे नहीं, because this confidence has to be created in the patient, to the patient, that कि वो गिरेंगे नहीं. जब उसको ये confidence होगा then only he will be able to walk or use the mobility aids. तो accordingly patient के जिसको ज़्यादा support चाहिए, we can give more support, we can try with the little more support, or we can try with the smaller support. then उसको थोड़ा, because उसको training चाहिए, practice चाहिए, accordingly उसके समटाइम्स आपने देखा होगा कि पैरेलल बार के अंदर चलाने की भी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज गिविंग मोर स्टेबिलिटी. इतना लंबा एक जो 10 फुट 12 फुट का पैरेलल बार लगा देते हैं, उसके साथ में उनको एक चलने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, सो दैट कि इफ़ द अप्लाइंसेस आर बीइंग यूज्ड, आर्टिफिशियल लिम्ब या कैलिपर्स और स्प्लिंट्स लगाए गए हैं, उसके पैरेलल बार के अंदर उसको चलाने की प्रैक्टिस करवा दी जाए. वही है, दैट इज़ ओनली द बेस दैट वी वांट टू डेवलप इट. उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, सो दैट कि वो एक सेफ़ हैं, चलने के लिए बहुत सेफ़ हैं, तो दे विल बी. तो इस तरह से क्रचेज़ और इनके साथ में. और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए, देयर इज़ अ डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो बच्चों के अंदर सेरेब्रल पल्सी के बच्चे ले जाइएगा बाय बर्थ, जो उनको इट डिपेंड्स सिवियरिटी ऑफ द चाइल्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द सेरेब्रल पल्सी की स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं उसके अंदर भी. तो उसके अंदर भी इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट स्टेबल, मीन्स दे नीड सम सपोर्ट टू वॉक, तो उसके लिए डिपेंडिंग ऑन दैट फर्स्ट द पोजीशनिंग ऑफ द लोअर लिम्स, बिकॉज अगर लोअर लिम उनके कंट्रोल में पोजीशन ठीक से नहीं आ रही है, दिस इज़ मोस्ट कॉमन. पोजीशन कॉमन नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती, मीन्स दे वॉक ऑन द टोज़ के ऊपर चलना, इट इज़ नॉट वायबल. कभी भी कोई भी टोज़ के ऊपर, इवन आई कैन नॉट वॉक ऑन द टोज़, इवन यू कैन नॉट वॉक ऑन द टोज़ के ऊपर चलने के लिए वी नीड lot of practice, or we cannot walk for long distances, we cannot walk for long time as well. थोड़ी देर के लिए चलना तो आसान है, आप 10 कदम 20 कदम ऐसे चल लेंगे, that with a great difficulty. तो उसके साथ means it's not a regular routine walking with on the toes, but if the child is on the toes and heel is not touching the ground, it means first of all we have to make the child stand on a होल फीट, दोनों पैरों के ऊपर रुक जाना चाहिए, उसके पैर को वेट बराबर आना चाहिए. देन ओनली वी फील दैट पेशेंट विल बी, द चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक कंफर्टेबली. तो उसके लिए क्या होता है, वी नीड टू गिव देम एंकल फुट ऑर्थोसिस, समटाइम्स वी मे नीड टू गिव देम नी एंकल फुट ऑर्थोसिस. इफ नी इज ऑल्सो नॉट कंट्रोल्ड, देन अकॉर्डिंगली देन वी नीड टू गिव एन अप्लायंसेस, एंड देन वी हैव टू गिव देम वॉकिंग सपोर्ट. वॉकिंग सपोर्ट के लिए एक बच्चे को आपने शुरू में देखा, सीपी का बच्चा था, ही वॉज वॉकिंग विद द टेट्रापॉड, 4 पैर वाली स्टिक पकड़ के भी चल रहा था. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ दी अनदर मोबिलिटी एड्स, मैं आप अभी स्लाइड में देखेंगे, दैट इज़ द रोलेटर्स. दीज आर द रोलेटर्स विच आर टू बी यूज बाय द चिल्ड्रन विद द सेरेब्रल पल्सी. जो सेरेब्रल पल्सी के बच्चे होते हैं उनके यूसेज के लिए ये anterior rollator. Anterior rollator, you can see that there are 2 wheels on the anterior side and 2 stoppers on the posterior side, 4 base. The base is very wide and there's a handle over that, where that handle is also adjustable. Height can be adjusted. नीचे से ऊपर करके इसको height को हम बढ़ा सकते हैं. Plus it has got a folding facility, means one can fold it and carry into the vehicle. कार में, स्कूटर में, कहीं भी ले जाना चाहते हैं, इसको फोल्ड करके ले जा भी सकते हैं. सो इस रोलेटर का यूसेज क्या है कि जो बच्चे को स्टेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, नीड मोर स्टेबिलिटी, बिकॉज ही कैन लीन ऑन इट. फॉरवर्ड लीन कर जाते हैं और हल्का सा उसको लिफ्ट करते हैं पीछे से. जो हैंडल को अगर लिफ्ट करेंगे तो जो टिप्स है जो पोस्टीरियर साइड पे, वो टिप्स थोड़े से लिफ्ट हो जाएंगे तो सामने वाले व्हील कीप ऑन मूविंग, सामने मूव कर जाते हैं, फॉरवर्ड मूव करके जाते हैं. देन अप टू द कंफर्टेबल डिस्टेंस बच्चा अपने आप उसको वापस पीछे छोड़ देता है, तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं, रुक जाता है रोलेटर. देन मूव्स फॉरवर्ड, बच्चा अपने आप को मूव करता है फॉरवर्ड. अपने आप को मूव करने के बाद में देन अगेन लिफ्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, थोड़ा और आगे मूव करता है. सो दिस इज़ द एक जो साइकिल बन जाता है उसका चलने का. विद दिस दे वॉक वेरी फास्ट. आपने कई दफ़ा ये जो टेलीविज़न के अंदर या हमारे
जो नव शिखर के अंदर भी इस तरह की जो बच्चे सीपी के चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी यू मस्ट हैव सीन द चिल्ड्रन, दे आर वॉकिंग वेरी कंफर्टेबली, वेरी फास्ट एज वेल, विद द हेल्प ऑफ दिस रोलेटर्स और विद द सम हेल्प ऑफ सम अप्लायंसेस एज वेल. तो ये एक रोलेटर एंटीरियर साइड पे वेयर द चाइल्ड रिक्वायर्स मोर स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए उसको. ही इज़ नॉट एबल टू पुट अ वेट, स्टेबलाइज हिमसेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को ठीक से स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको एक ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है. इन दैट केस anterior rollator which is adjustable according to the height of the child. Again the height is always below the elbow, the handle should be below the elbow, elbow से नीचे रहेगा तो उसको एक comfortable support, उसके weight bearing support easy रहेगी उसके साथ में. And इसके साथ में we have got another type of the rollator. You can see the another slide, that is the rollator which is posterior rollator, means the child के सामने जो है कुछ भी नहीं रहता है, खाली रहता है, ओनली ऑन द बैक साइड देयर इज अ सपोर्ट, और बच्चा इसके सामने रहता है और पीछे दो टिप्स हैं, इसको पोस्टीरियरली लिफ्ट किया जाता है एंड फॉरवर्ड व्हील्स जो है मूव करते हैं. इन दिस केस द बेनिफिट ऑफ इट, द चाइल्ड makes himself more straight, सीधा खड़ा, means he is not leaning on it. The previous one you have seen, the child is leaning on it, उसके ऊपर झुक जाते हैं, आगे मुड़ जाते हैं उसके ऊपर, मीन्स उनकी एक बैकबोन की टेंडेंसी होती है जो पीछे से आप देख रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर मूव कर जाता है, फॉरवर्ड कर जाते हैं, इसके ऊपर बॉडी वेट पूरा उसके ऊपर ही डाल देते हैं ऐसे झुकने के बाद. इसके ऊपर भी पूरा बॉडी वेट ले सकते हैं, जो हैंडल इसके ऊपर है, दे कैन पुट अ बॉडी वेट ऑन इट बट नीड नॉट टू लीन ऑन इट. इसके ऊपर झुकने की ज़रूरत नहीं है, कीपिंग हिमसेल्फ स्ट्रेट, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख सकते हैं. इन दिस केस द चाइल्ड हैज़ गॉट मोर स्टेबिलिटी, अपने अंदर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है बट स्टिल रिक्वायर्स सम सपोर्ट, उसको फिर भी कुछ ज़रूरत है. देन वी कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ द रोलेटर. इट हैज़ गॉट मोर एडवांटेजेस देन द एंटीरियर रोलेटर, क्योंकि इसके अंदर द बॉडी रिमेन स्ट्रेट, एक सीधी रहती है बॉडी इसके अंदर, उसको ईजी रहता है बॉडी को, डेवलपमेंट जो बॉडी की होती है वो एक राइट डायरेक्शन में रहती है, अच्छी रहती है. उसके साथ में देयर नो एनी कोई कुछ और डिफेक्ट या इनएबिलिटी इस तरह की नहीं आने देती है. सो इट्स very good to be used with this. This is again adjustable and has got a folding facility as well as height adjustment is there, because all the things we need to make flexible or adjustable so that बच्चे ने तो ग्रो करना है, टाइम टू टाइम बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी. सो वी हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ. जितनी उसकी लाइफ है बच्चे के, इसकी अप्लायंसेस की या मोबिलिटी एड की, वो पूरी यूटिलाइज हो सके, मीन्स 2-3 साल 4 साल तक उसको यूज़ किया जा सके. देन इट हैज़ टू बी चेंज आफ्टर 3-4 ईयर्स. जब पूरी उसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है, पूरी मैक्सिमम तक चले जाते हैं, देन ओनली वी थिंक ऑफ दैट अब इसको चेंज कर देना चाहिए. एंड विद इन दैट पीरियड certainly we need to change the rubber tips, certainly we may need to change the wheels as well. रबर के व्हील है, वो भी जब रोटेट करेंगे और रोड के ऊपर अगर चलेंगे तो जल्दी घिसेंगे, दैट उसको भी वियर एंड टीयर होएगी. उस वियर एंड टीयर को भी इसके अंदर हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा. उसकी मेंटेनेंस अच्छी रखनी पड़ेगी, बिकॉज व्हील हैज़ टू मूव. उसके अंदर ऑयलिंग थोड़ा सा व्हील के अंदर, सो दैट कि रस्ट या मिट्टी, क्योंकि मिट्टी भी पड़ सकती है उसके अंदर, रस्ट भी आ सकता है उसके अंदर, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी नीड टू मेंटेन ऑयलिंग वगैरह करके साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा. सो दैट कि समटाइम्स हैंड ग्रिप्स, क्योंकि हाथ को यूज़ करते करते पसीना भी आता है, गंदी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वी हैव टू मेंटेन दैम. साफ़ भी करनी पड़ेंगी, हो सकता है हैंड ग्रिप बदलने भी पड़े, दैन वी नीड टू चेंज द हैंड ग्रिप एज वेल. तो ये सब चीज़ें हर अप्लाइंसेस के अंदर, जो भी मोबिलिटी एड्स हों या कोई भी अप्लाइंसेस हैं, ऑर्थोटिक अप्लाइंसेस हैं, प्रोस्थेटिक अप्लाइंसेस हैं, वी नीड वेरी गुड मेंटेनेंस, सो दैट कि उसकी सर्विसेज हमें पूरी तरह से अच्छी सर्विसेज मिल सकें. सो ये सब चीज़ों के लिए एंड वी नीड इट ऑल दिस. और सीपी के बच्चे जो हैं, डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन, नॉट ऑल, आई विल नॉट से कि सभी सीपी के बच्चे, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज उसको कितना सीवियर है. सो वॉकिंग की स्टेज में है, देन ओनली दिस वॉकिंग एड्स आर सूटेबल. अगर वॉकिंग की स्टेज में नहीं है बच्चा, अभी इट्स नॉट रेडी टू सिट प्रॉपरली, नॉट रेडी टू स्टैंड प्रॉपरली, देन वॉकिंग स्टेज अभी थोड़ी और दूर है उसकी. तो स्टॉक जब तक वॉकिंग की स्टेज में आ जाते हैं, देन ओनली वी थिंक ऑफ गिविंग देम सम मोबिलिटी एड देने के लिए हम उनके लिए प्लान करते हैं, सोचते हैं, वी ट्राई करते हैं, कोशिश भी करते हैं, सो दैट कि उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं. हो सकता है कि उसको थोड़ा टाइम लगे, अडॉप्ट करने में वक्त लगता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू वर्क फॉर दैट. वो जब तक हम इसको करेंगे नहीं, तो ये
हमारे एक पैटर्न के अंदर ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं हो पाती हैं, उसके अंदर ठीक से आ नहीं पाती हैं. तो ये सब चीज़ों का यूसेज एज पर द स्टेज वाइज वी कैन से दैट एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के बाद देन वी कीप ऑन वॉचिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. उसकी डेवलपमेंट कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, या उसके अंदर फिर से कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या अडेप्टेशंस लाने की ज़रूरत है. वी हैव टू थिंक ऑफ दैट ऑल्सो. सो इसके ऊपर पूरी असेसमेंट दैट वी नीड टू असेस द चाइल्ड, वी नीड टू असेस द मोबिलिटी एड एज वेल. तो दोनों की असेसमेंट करके दोनों को मैच करके चलाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट वी नीड. So matching the ability of a child and the usage of the mobility aids. So rollators में anterior and posterior rollators both are being used with the stages according to severity of the CP child, according to the demand what the child demands and what we can provide according to it as per a prosthetist and orthotist. So other than rollators for children's, what are the walking aids, sir, that we can provide? For children, rollator are more useful because these are very handy, small, light in weight, and as you have seen, the sticks are also there. And other walking aids are, if we talk about this, with the four parts are the these walkers. We can say these are the walkers, but for the adults, children के लिए तो rollators are good. They are very good. And if you remember, I can tell you one thing, that in the villages they used to make some three-wheeler rollator, एक लकड़ी के साथ में triangular बना के, still it is in use, but that is not for to be meant for the usage of the person with the different abilities. उनके लिए नहीं है. That is for the normal children. They used to play with that. The छोटी एज में जैसे चलना सीखता है बच्चा, उसको चलने के लिए they for make him walk, चलना सीख जाए, उसके लिए वो एक they make कलरफुल लकड़ी का बनाते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं. विलेजेस में अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया वो बनाए जाते हैं. वो एक इनिशियल स्टेजेस के ऊपर चलने के लिए होते हैं. एंड सिमिलरली अगर इनिशियल स्टेज में आप 9 महीने 10 महीने के बच्चे के लिए देखेंगे तो यूजली द एक वॉकर बने होते हैं बच्चों के लिए, विच हैज़ गॉट 6 व्हील्स, एक राउंड सर्कल के अंदर, और बीच में सिटिंग कैपेसिटी होती है. सो बच्चा चाहे तो खड़ा हो जाए, चाहे तो बैठ जाए, उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो पैरों को मूव करेगा, तो कीप ऑन मूविंग विद दैट ऑल्सो. वो छोटे बच्चों को, इट्स नॉट फॉर द पर्सन विद देयर डिफरेंट एबिलिटीज़, दैट इज़ फॉर द नॉर्मल चिल्ड्रन टू बी मीन्स लर्न हाउ टू वॉक. उसको चलने की फ्रीडम देने के लिए और थोड़ा सा उसको एक एनकरेज करने के लिए, द वॉकिंग एनकरेजमेंट देने के लिए, देन दैट इज़ द थिंग दैट उसके लिए वो यूज़ किए जाते हैं. सिमिलरली for the person with the different abilities on the same pattern, there are some type of the walkers as well. थोड़े बच्चे जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनके लिए भी इस तरह का सिटिंग प्रोविज़न के साथ एक वॉकिंग का एक वॉकर बनाए जाते हैं, बनते हैं और मार्केट में अवेलेबल भी हैं. वो दोज आर द थिंग्स दैट अगेन उनके लिए असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड, उसके लिए फिट है, तो देन वी कैन यूज़ दोज टाइप ऑफ द वॉकिंग एड्स. जैसा अभी आप पूछ रहे हैं कि रोलेटर और उसके बारे में अलग और कौन से, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी यूज. बट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एडल्ट्स, बड़ों के लिए देखें तो बड़ों के लिए येस वी हैव गॉट द डिफरेंट टाइप ऑफ द वॉकर्स आर देयर. अभी आप स्लाइड में देख रहे थे, स्लाइड में वॉकर्स आप देख रहे हैं विच आर बीइंग यूज्ड. नाउ सी द पर्सन वन साइड यू कैन सी द यूजिंग, बिकॉज ही डजंट हैव बोथ द लेग्स, ही हैज़ लॉस्ट बोथ द लेग्स अबव द नी. दोनों टांगें अबाउट से नी से ऊपर नहीं है, तो सर्टनली ही नीड मोर स्टेबिलिटी. तो उसके लिए क्या है कि उसको एक फर्म सपोर्ट चाहिए, विच इज़ ना, इसके अंदर 4 पैर हैं इसके अंदर, सो उसको एक आराम से हल्की सी सपोर्ट पकड़ के ही कैन स्टैंड विद दैट. ऑन द अदर साइड यू कैन सी द पर्सन विद द पैराप्लेजिक, ही इज़ वेयरिंग ऑर्थोसिस बोथ द साइड्स, KFOs हैं, साथ में उसने बैग भी लगा रखा है, बिकॉज ही डजंट हैव बाउल कंट्रोल नहीं है उसको, तो एक कैथेटर लगा के उसको साथ में कलेक्टिंग बैग लगा हुआ है साथ में इसके. बट फॉर द वॉकिंग पर्पज़ उसको एक मोबिलिटी एड साथ में एक वॉकर दिया गया, सो दैट ही शुड कीप ऑन मोबाइल. बिकॉज एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, एक वॉकिंग इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच पर्सन. हम सबको एक वॉकिंग कैपेसिटी, एक वॉकिंग एबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए. नो वन वुड लाइक टू सिट ऑन परमानेंटली, नो वुड लाइक टू सिट दे आइडियली, और कुछ भी करना नहीं चाहेगा. हर कोई चलना चाहता है, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर कोई चाहता है कि दे नीड टू कीप ऑन मूविंग एटलीस्ट फॉर देयर डेली एक्टिविटीज़, और अपने काम के लिए या कहीं भी जाना चाहें तो दे वांट टू मूव एज मच एज दे पॉसिबल. वो सब कोई मूव करना चाहता है.
बच्चों के अंदर भी यही रहता है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, नॉर्मल बच्चे की बात करें तो 1 साल 1.25 साल में बच्चे दे ट्राई टू मूव, चलना शुरू कर देते हैं, कभी भी खड़े नहीं होंगे और खूब दौड़ते हैं, मतलब विदाउट एनी एम दौड़ लगाते हैं वो। तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वी कीप ऑन आवर एम रखते हैं कि हमने चल के कहाँ तक जाना है, दौड़ के कहाँ तक जाना है, दिस इज द एम बेस्ड होता है। वेर एज बच्चों के अंदर देयर इज नो एम, वो तो अपना चलना है उनको, दे कीप ऑन मूविंग, बस भागते 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 चले जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। वेर एज जैसे अब बड़े हो गए, द पर्सन विद द डिफरेंट एबिलिटीज दे नीड टू वॉक विद द एम, मेरे को टॉयलेट तक जाना है, बाथरूम तक जाना है, आई हैव टू गो टू सम बैंक, आई हैव टू गो सम वर्क। सो इनका एक एम बेस हो जाता है कि हमें डेफिनेटली वी नीड इतनी वॉकिंग चाहिए सो दैट कि वी शुड बी एबल टू डू अवर एक्टिविटीज़। हम अपना टॉयलेटिंग और बाथरूम और इधर जाने के लिए वी शुड बी एबल टू डू आवर सेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बडी एल्स, एटलीस्ट इतना काम तो हो जाए अपने साथ में। सिमिलरली अगर ओल्ड एज की बात करते हैं तो डेफिनेटली ओल्ड एज पीपल दे ऑल्सो वांट कि उनकी जो मोबिलिटी है दैट मोबिलिटी शुड बी एज पर जो उनकी डेली की रिक्वायरमेंट है, जो रोज़ की उनकी रिक्वायरमेंट, दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर्स उन एक्टिविटीज़ के लिए भी। सो एटलीस्ट फॉर देयर पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए क्या है वो, दे समटाइम्स बैंक भी जाना है तो भी दे वांट कि एक स्टिक पकड़ के चले जाएंगे, वॉकर पकड़ के चले जाएंगे, दे वांट टू गो विद देम। मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है या कुछ खरीदना है या कुछ भी करना है, इवन दो देयर आर मैनी पीपल एट द होम, कोई भी उनको मार्केट से सामान ला के दे देगा या कोई भी उनके लिए काम कर देगा, वट एवर दे वॉन्ट, बट स्टिल they have got their intention, they have got their internal will that they want to walk themselves to keep them fit also। उनको अपने लिए एक चलना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि all these mobility aids has to be used for this walking purpose। So self dependency is a normal human tendency to be self dependent, अपना काम खुद करें, खुद बाहर जाएं, खुद अपना काम करें, ताकि जितनी भी डिसेबिलिटी हो उसमें भी हम जितना हमारे अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उतना हम यूज़ करके हम अपना काम कर सकें। सो राइटली सेड, टेंडेंसी एंड डिटर्मिनेशन व्हाट मेक्स अ पर्सन वर्क एंड डू हिज वर्क। That is very much needed, the determination of an individual that they want to walk or they want to move with the help of any appliances, जो भी अगर उनको चाहिए, if they need any help they can get the help and they would like to move। that is the उनकी अपनी खुद की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। So in walkers, what are the different varieties we can see in walkers? Yes, walkers के अंदर now in you have seen in the slide, these are the folding walkers। there are now these again walkers are again adjustable in height, इसकी height को adjust किया जा सकता है। and these are the folding, non-folding जो होते हैं these are the fixed, they take a lot of space, are more useful for the clinics, hospitals or where they don't want to move it from where, और घर के अंदर अगर चलना है तो भी वो दे आर मोर स्टेबल देन द फोल्डिंग वाला थोड़ा सा फ्लिम्जी हो जाता है बिकॉज देयर इज अ हिंज, सम थोड़ा मूवमेंट के लिए उसमें रहता है बट इट्स स्लाइटली फ्लिम्जी हो जाता है। बट द सॉलिड वन, द नॉन फोल्डिंग इज नॉट फ्लिम्जी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एनफ उसके लिए रहता है। प्लस इसके अंदर भी लाइक आपने रोलेटर के अंदर देखा, देयर आर 2 व्हील्स ऑन द एंटीरियर साइड और पीछे के जो पैर हैं उसके लिए नीचे रबर टिप लगे हुए हैं। For the old age people, those they cannot lift the walker because if one has to walk with the walker means you have to lift the walker, keep it forward, then only you can move yourself forward, then again lift it, keep it forward, then move forward. So these are the steps are being taken for the walking. Whereas the person is not able to lift it, then only the thing that the walker with the front wheels, 2 wheels, straight 2 wheels, only the same procedure with the rollator the child used to do it, the adult has to, old age people they have to do it, means पिछले पैरों को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, then they can push it forward so that कि wheel के ऊपर ही रोल कर जाएगा walker forward की तरफ, again keep the posterior tips on the ground so that कि firm हो जाए उसके ऊपर, then move forward। So this is the process for walking with the different type of the walker that we have got। तो इस तरह के व्हील के साथ भी वॉकर अवेलेबल हैं। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ द वॉकर, वैरायटी ऑफ द एंड डिफरेंट कंपनीज दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट डिजाइंस आल्सो, बट द बेसिक प्रिंसिपल एंड द रिक्वायरमेंट इज सेम। So as we got to know about the walkers, the rollators and all, so for the viewers, for any suggestions or queries, you can call us on our toll free number, that is 1800 11 2008. Our landline number is 011 265 11609. Also you can mail us on our website
that is www.rehabcouncil.nic.in. We'll continue our chat with Mr. V. Gulati sir. Till then, it's a short break. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में
भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। Welcome back to all our viewers of RCI E channel. So, Mr. Vijay Gulati sir, who is a senior consultant in prosthetics and orthotics, discussed our topic assessment for mobility aids and rehabilitation aids. Till now we have reached up to the different types of mobility aids. We talked about canes or sticks, crutches, auxiliary crutches, elbow crutches, what are the usages, what are the advantages, what are disadvantages and all. So we reached up to the walkers for the adult patients who is affected from polio or any other disability. So in walkers we are discussing about the we used to keep wheels in Wheels front, in the front side. posterior wheels, anterior Yes. wheels. So can we get more information? Yeah, on that this? is as I told you that if old age people they don't have much strength in their hand to lift the walker, they can have a walker with the front wheels. So that key same procedure can be followed by lifting from the posterior side and push it forward, then put it back on the posterior stoppers and then move forward. So this is the एक walking pattern can be developed with the wheels on the anterior side, which makes easier for a person who is not able to lift the walker completely. पूरा नहीं उठा सकते हैं तो उसके लिए उनको एक support मिल जाती है. So there are different users and different varieties of the mobility aids, crutches, walkers and everything is available. For children we have discussed about the rollators. Two different kind of the rollators are there, and these are the things which are being used for the children for the locomotion or for the mobility. That's what is about. Now see the question comes, if there is a completely say flail lower limbs or not ability, both the limbs are not able to bear the weight, then what to do? How can one can walk with that? It's very difficult for that. Then we have got no other option other than giving them a wheelchair. Now wheelchairs are there which are meant for the mobility. एक चलने फिरने के लिए साधन बन जाती हैं. The person जिनको disability severe हो गई, थोड़ी ज़्यादा है, जो none of these earlier appliances जो भी हम अभी बात कर रहे थे, with the help of orthotic and prosthetic appliances and the mobility aids like crutches, walkers or the sticks, if they are not able to make them mobile, locomotion में उनको दिक्कत आती है, नहीं चल पाते हैं, तो then we don't have any other option to make them walk with the wheelchair, because you must have seen many wheelchair users. Wheelchairs के अंदर भी we have got a different variety, different sizes and different quality of the wheelchairs. So but the basically that we need to do the assessment of the person, which kind of the wheelchair, after assessing the wheelchair as well, कौन सी wheelchair किसको कौन सी ज़्यादा सूट करेगी, that is first thing. So उसके साथ basis के ऊपर, और as per the requirement of the individual as well, क्योंकि आप individual के requirement को भी पूरे ध्यान में रखेंगे, उनको क्या चाहते हैं, उनकी upper extremity कितना काम कर रही है, either they are self propeller or they cannot propel. If they are not able to propel themselves, then we need a different type of the different kind of the wheelchair, so that somebody or some sibling or some other helper or the somebody will be
हेल्पिंग द पर्सन फॉर द प्रोपेलिंग, मूव करने के लिए, प्रोपेल करने के लिए, उसको चलने के लिए, बिकॉज व्हील चेयर अपने आप कोई नहीं चलेगी, इधर इट इज़ ए मोटराइज और इट्स ए मैनुअल। मोटराइज भी होगी तो भी अपने आप नहीं चलेगी अनलेस वी द पर्सन इज एबल टू प्ले विद द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को अगर वो चला सकते हैं देन ओनली द व्हील चेयर, द मोटराइज व्हील चेयर विल बी मूविंग। whereas manual wheelchair, if he is able to propel with both the hands, there are wheelchair which are being propelled with one hand as well. एक हाथ के साथ प्रोपेल करने वाली भी है, किसी का एक हाथ ठीक है, so there are wheelchair which can be propelled with one hand as well because these are specially designed for that. उस तरह के डिज़ाइन की भी व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो एक हाथ से प्रोपेल होती है, इधर विद द लेफ्ट और विद द राइट इटसेल्फ, वेयर एवर द विच एवर द हैंड इज मोर स्ट्रॉन्गर वन कैन यूज विद दैट। बट इसके साथ में असेसमेंट करना, जैसे हम बिकॉज वी आर टॉकिंग टुडे ऑन द बेसिस ऑन द असेसमेंट पार्ट, असेसमेंट पार्ट के लिए मीन्स व्हील चेयर यूजर इफ ही इज ए सेल्फ person that he can be transferred from bed to the wheelchair और from wheelchair to the bed, दोनों तरफ दोनों तरीके चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। सर्टेनली इतनी एक एबिलिटी पेशेंट के अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो दे नीड ए फर्दर सपोर्ट, एक किसी और की सपोर्ट भी लेनी पड़ सकती है उनको फॉर द शिफ्टिंग, बिकॉज ऑल द टाइम नॉट गोइंग टू सिट ऑन ए व्हील चेयर। व्हील चेयर के ऊपर सारी बहुत देर तो बैठ नहीं सकते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे फिर लेटना भी चाहेंगे, खड़े नहीं हो सकते हैं बिकॉज नॉट एबल टू स्टैंड। अगर खड़े हो सकते तो फिर तो हम उनको मूव ही कर देते, चला ही देते उनको, फिर व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं थी। बट पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्टैंड मीन्स उनके लोअर लिम के ऊपर वेट बेरिंग नहीं है, वजन नहीं ले सकते हैं, दिस इज़ द कॉज, देन वी नीड टू गिव देम ए व्हील चेयर और वी मेक देम मूव विद द व्हील चेयर। तो इस तरह की व्हील चेयर के लिए फिर देन वी नीड इट, जो एक फोल्डिंग व्हील चेयर आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं, देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द व्हील चेयर्स जो फोल्डिंग व्हील चेयर हैं। इसके अंदर यू कैन सी द सेल्फ प्रोपेलिंग व्हील्स लगे हुए हैं साइडों में, जो बड़े व्हील हैं उसके साथ में एक एक्स्ट्रा व्हील लगा हुआ है जो विच हेल्प्स द पर्सन टू प्रोपेल इट, उसको आगे मूव करने के लिए। आप आज के टाइम में व्हील चेयर यूज़र का बहुत अच्छा आप उनके एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, दे मूव वेरी फास्ट, इनकी रेस भी लगती है, दे रन सो फास्ट कि इनकी अच्छी स्पीड भी होती है, एंड दे आर एबल टू बैलेंस ऑन 2 व्हील्स ओनली, नॉट ऑन द 4 व्हील्स। देयर कैपेबिलिटी ऑफ नॉट ऑल बट सम ऑफ देम they are say we can say the sports person, athletics हैं, वो खेलते हैं इसके ऊपर, even we are not able to balance on the 2 wheels, it is very difficult for us even to balance on these 2 wheels on the posterior wheels। तो 2 व्हील के ऊपर वो बैलेंस करके दे कीप डांसिंग और मूव करते हैं, इट्स ए देयर ओन से एक एबिलिटी है उनकी, दे गॉट देयर ओन एबिलिटी जो उसके अंदर है, वो उसके साथ में इट हैज़ कम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस। जितना वो प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, दे कीप ऑन डूइंग इट, एक बारी थोड़ा गिरे होंगे, दूसरी बारी गिरे होंगे, तीसरी बारी, फिर देन दे वुड हैव लर्न इट देमसेल्फ कि कैसे इसको बैलेंस करना है, तो उसके तरीके से वो बैलेंस करके दे कैन कीप ऑन दिस, लाइक लर्निंग अ बाइसाइकिल। इस तरह से हर चीज़ को सीखने के लिए यू नीड ए प्रैक्टिस, तो उस प्रैक्टिस के साथ में दे लर्न इट। एंड इसके ऊपर नाउ फोल्डिंग व्हील चेयर के अंदर भी यू विल सी दैट इनके फुट स्टेप्स, बिकॉज हर आदमी की हाइट का फ़र्क है, ऊपर नीचे है, तो फुट स्टेप्स आर ऑल्सो एडजस्टेबल, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कर सकते हैं उसको। प्लस समटाइम्स यू नो सम ऑफ द व्हील चेयर्स वी वांट टू कीप द व्हील चेयर्स से कि आगे की जो फुट रेस्ट है, बिकॉज इट इज़ स्लांटेड एंटीरियरली, अगर सामने किसी चीज़ से टकराते हैं तो मीन्स देयर इज ऑब्स्टेकल्स, सो देयर आर रिमूवेबल फुट रेस्ट, वन कैन रिमूव इट, आप उसको निकाल दीजिएगा एक जस्ट विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल क्लैंप, एक क्लैंप लगा होता है, आप उसको हटाइए और एंटीरियर जो फुट रेस्ट है वो पूरा हट जाता है। सो पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू द बेड और वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट वेयर दे वांट टू गो, जहाँ जाना चाहते हैं उनको बड़े क्लोज हो जाते हैं। सो दैट इज़ द अनदर ऑप्शंस इन द व्हील चेयर। और व्हील चेयर के अंदर हर इंडिविजुअल दे कैन आस्क फॉर द पर्सन हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग द व्हील चेयर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, उनको क्या क्या चाहिए, किस तरह की व्हील चेयर चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, जितना भी वो चाहें उसके अकॉर्डिंगली द मैन्युफैक्चरर कैन डिज़ाइन एंड मेक द व्हील चेयर फॉर देम, दैट इज़ ऑल्सो देयर। नाउ नॉन फोल्डिंग व्हील चेयर्स, वो भी व्हील चेयर्स ऐसी, इसके अंदर भी नाउ फोल्डिंग व्हील चेयर के अंदर भी इफ़ यू विल सी दैट देयर आर सीट्स विच आर हार्ड सीट, देयर इज अ सीट विच इज़ सॉफ्ट जो फोल्डिंग में आती है, आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। हार्ड सीट इज़ मीन्स इट डजेंट सैग इन बिटवीन, सीधी फ्लैट रहती है, जैसे हम चेयर पे बैठ रहे हैं ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है।
दिस इज ऑल दैट रिक्वायरमेंट बेस ऑफ द इंडिविजुअल, जैसा जैसा जिसको चाहिए अकॉर्डिंगली वो उसके साथ में उसको ले सकते हैं, या अपनी बनवा सकते हैं, या अपनी व्हील चेयर को डिज़ाइन करवा सकते हैं, या मार्केट में जाके दे कैन सेलेक्ट देयर, बिकॉज मैन्युफैक्चरर दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द व्हील चेयर्स, तो आप किसी भी तरह की व्हील चेयर को इसके साथ में आप इसको ले सकते हैं. बट द मेन मोटो और द पर्पज ऑफ द व्हील चेयर इज दैट मोबिलिटी, वन हैज़ टू मूव. अब इसके लिए क्या है, डिफरेंट इसके अंदर इश्यूज आते हैं. लाइक कैस्टर व्हील की बात करेंगे, अगर आप कैस्टर व्हील को देखेंगे तो कैस्टर व्हील का साइज अगर तो साइज बड़ा है देन इट कैन से मूव एट थोड़ा अनइवन ग्राउंड के ऊपर भी थोड़ा मूव करने में इजीली मूव कर जाता है. बट इफ़ द कैस्टर व्हील इज स्मॉलर, छोटा रहेगा, वो छोटी मोटी जगह पे भी अटक जाएगा, फंस जाएगा, जो व्हील चेयर को मूव नहीं करने देगा. सो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द व्हील चेयर यूज़र. सो ये सब चीज़ें जो हैं उसकी यूजिंग, कहाँ उसने एनवायरनमेंट क्या है उसका यूज़ करने का, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए. किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि ऊंचाई कम हो, सो दैट वी कैन कीप इन द डिगी ऑफ द कार, फोल्ड करके उसको डिगी में, उनके साथ में जो अटेंडेंट होगा उनको गाड़ी में बिठाने के बाद में वुड लाइक टू फोल्ड इट, कीप इट इन द कार, देन गो टू द मार्केट, वहाँ निकाल के फिर उसको व्हील चेयर पर लेके देन दे कैन गो टू द, और कहीं भी जाना चाहें तो उसके साथ में वो जाना चाहेंगे. सो दे नीड हाइट इतनी हो, कार की डिगी में आ जानी चाहिए. सो ये भी होना चाहिए ना. चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, दे वांट टू यूज़ इट इन द हाउस, दे वांट द इतनी की चौड़ाई हो सो हमारे बाथरूम के दरवाजे में से निकल जानी चाहिए. सो इट शुड बी लेसर वाइडर, कम चौड़ी होनी चाहिए ताकि दरवाजे में से निकल जाए. आप दरवाजे बदलने तो मुश्किल हो जाते हैं. समटाइम्स दे डू इट, दे चेंज द डोर्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है, दरवाज़ा भी खुला कर सकते हैं. बट स्टिल दे वांट दैट विच इज़ ईजिली कैन बी मूव्ड इन टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. तो उसके साथ ही means one can design it, or one can ask for the wheelchair which is suitable for the conditions whichever the available with the person to person, हर individual के लिए. So we see in this self-propelling, using our upper extremity we propel it forward. So if a patient is quadriplegic, if the Yes. upper extremity is not working as Yes. as we need to propel the wheelchair, what are the devices or aids is used, sir, Yeah, in there particular wheelchairs? are wheelchairs which are being you can term is at yes, you can see that to be propelled by the this slide. You can see this is the wheelchair which is to be propelled. You can see the wheels are rear wheel are also smaller. There's no self propelling wheel. इसमें self propelling wheel नहीं है. Only the handle is there on the back side. The one has to be shifted on it with the help of a person, some otherwise, because he is not able to. You said quadriplegic है तो उसको caretaker जो होगा, sibling होगा, वो उसको, या attendant होगा, वो उसको shift करेंगे इसके ऊपर, then move it, इसको पीछे से push करेंगे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं. Anterior wheels are again caster wheel रहेंगे because it makes easy to turn from प्लेस टू प्लेस, जहाँ भी टर्न करना चाहेंगे तो इससे इजीली इसको टर्न कर सकते हैं. सो ये जो एक व्हील चेयर डिज़ाइन आती है इस तरह से, देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन इन दिस एज वेल, डिफरेंट साइजेज आल्सो एज वेल, कि आप इसके डिफरेंट साइजेस ले सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन ले सकते हैं, जिसके अंदर यू विल सी दैट कि व्हील चेयर इज़ बीइंग प्रोपेल्ड बाय समबडी एल्स. तो क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट है तो उसके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं मूवमेंट करने के लिए उसको ज़रूर ले जाने के लिए मूव करना पड़ेगा. इसके अंदर भी सीट्स का भी अलग अलग अवेलेबल हैं, हार्ड सीट्स, स्ट्रेट और विद द सैगिंग सॉफ्ट सीट, या फिर फुटरेस्ट की हाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए देयर आर अवेलेबिलिटी दैट कितनी भी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं. देयर आर व्हील चेयर्स जो थोड़ा सा फुटरेस्ट को इंक्लिनेशन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ द डिज़ाइंस आर अवेलेबल जो व्हील चेयर के अंदर हैं. बट द बेसिक एम इज़ द अगेन दैट मोबिलिटी, दैट उनको हम चलाना चाहते हैं. वी वांट टू मेक देम शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. बाहर लेके जाना है, अंदर लेके आना है, ये सब चीज़ें जो हैं विद द हेल्प ऑफ अ व्हील चेयर दिस कैन बी. these are the all mechanical wheelchair, means manually operated wheelchairs, जो manually operate करते हैं, चाहे खुद चला रहा है, यूज़र चला रहा है, that is the self propelling, और somebody else will helping, either the sibling or an attendant, जो भी अगर उनको मूव करने के लिए मदद कर रहे हैं, that is those are the different design of the wheels. इस तरह से now we have got the different design of the wheelchair for the children as well, because as we mentioned in the earlier that there are the cerebral palsy children or the children with the disabilities, they are not able to walk,
So they need wheelchair. Definitely they need a wheelchair. So they cannot be fit into such a big wheelchair which is meant for the adults. So they need a smaller, chota wheelchair, halka wheelchair, so that they can be put into the wheelchair, maybe propelled by the initially by the sibling, but sometimes some of the children, they are grown up children, say 12-13 साल 14 साल की उम्र हो जाती है. At that time, if their hands are strong enough, they can propel themselves and can use the self-propelling wheelchair. ये उनके लिए एक that is the option, because this is again based on the assessment of the child as well as the assessment of the wheelchair as well. तो उसके बच्चे के असेसमेंट के बाद ये पता लगेगा कि यस, उसके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ है, ही इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग, तो उसको उसके लिए देन वी कैन गिव एडवाइस देम टू हैव ए सेल्फ प्रोपेलिंग व्हील चेयर, सो दैट कि बच्चे, द चिल्ड्रन विल बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, नोबडी वांट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर्स. तो उनको भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक उनके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि यस आई कैन मूव माई सेल्फ, चाहे ऑन अ व्हील चेयर. सो इस तरह की चीज़ें रहती हैं इसमें. So, okay, everyone, but sir, every patient can't afford a attendant or something. We heard about a famous personality, Stephen Hawking. Yes. The person uses a totally technology inducted into the wheelchair, Yes. computer-based or computer-operated wheelchair. Mm-hmm. So, is it available for normal persons? He's a famous personality, so he's having all the advantages he's needed. For the normal persons, what are the technology that has been inducted into the wheelchair? See, the motorized wheelchair which can be used by anybody who is having not much power on the upper extremity but still has got some little power, can if he or she can play with the joystick. अगर joystick को चला सकते हैं वो, तो एक joystick के साथ में very soft joystick होती है, जैसे कि आप देखते हैं बच्चे वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, तो it's a very soft joystick जो which can be operated, but टू कैरी इट, और उसके ऊपर व्हील चेयर पे अंदर बैठना, व्हील चेयर से उतरना, दैट दे नीड हेल्प ऑफ द अदर पर्सन एज वेल. बट उनको ज़रूरी है कि येस दे कैन मूव देमसेल्फ विद ए मोटराइज व्हील चेयर. देर आर डिज़ाइन ऑफ द व्हील चेयर्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट स्टिल इन द वर्ल्ड. We can say in the world means globally these wheelchairs are available which are being operated by different way of means. Like अगर आप स्टीफन हॉकिंस की बात कर रहे हैं तो उनकी एक कंप्यूटराइज व्हील चेयर है जो विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द जॉयस्टिक. इट इज़ नॉट बीइंग ऑपरेटेड बाय द जॉयस्टिक. सो इस तरह से देर आर कंपनीज और इन द ग्लोबल मार्केट दे डिज़ाइन द व्हील चेयर बीइंग ऑपरेटेड by the part of the body which is active, which a person or that person with the different abilities can be able to operate the wheelchair. So इस तरह की मिलती हैं, but only the thing cost is the factor. उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है. कीमत के लिए one has to prepare himself or herself कि इतनी कीमत अगर स्पेंड करना चाहते हैं तो definitely they can search for the global market में उनको इस तरह की wheelchairs available हो सकती हैं, मिल सकती हैं. There are scooters also जो विच आर सूटेबल फॉर द डिफरेंट एबिलिटी ऑफ द पर्सनस. जो स्कूटर के ऊपर छोटे हाइटें हैं, कुछ अदर कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसीज हैं, उसकी वजह से भी दे आर यूजिंग दिस स्कूटर्स और द मोटराइज व्हील चेयर्स जो बैटरी ऑपरेटेड होती हैं, बैटरी के साथ चलती हैं. सो उनके लिए एक स्लेक. बट ओनली द थिंग वी नीड टू हैव द प्लेस वेयर ऑल दीज थिंग्स कैन मूव. अगर जहाँ जाना है वहाँ स्टेयर्स हैं, वहाँ रैंप नहीं है, तो ये यूजलेस हो जाती हैं, कैन नॉट बी यूज. और लिफ्ट नहीं है, इधर देयर शुड बी रैम्प और देयर शुड बी लिफ्ट. वन पर्सन कैन मूव इनटू द बिल्डिंग एंड देन गेट इनटू द लिफ्ट, गो टू द फ्लोर वेयर दे वांट. एट द फ्लोर देयर शुड बी ए प्लेन, नॉट ऊपर नीचे जगह नहीं होनी चाहिए, नो स्टेप्स शुड बी देयर. तो उसकी वजह से देन ओनली इट शुड बी ए, जैसा कि अब आजकल आप चर्चा में देखते हैं, इट शुड बी डिसेबल्ड फ्रेंडली थिंग्स. Metros So, we can see. हर चीज़ मेट्रो के अंदर आप देख रहे हैं, मेट्रो का Yes, लेवल yes. एकदम प्लेटफॉर्म के Disabled साथ में friendly. मैच करता है, डिसेबल्ड फ्रेंडली है. सो इस तरह से अगर आने वाले टाइम के अंदर वी मे गेट द डिसेबल्ड फ्रेंडली. नाउ लो फ्लोर बसेज आर देयर दैट विच आर डिसेबल्ड फ्रेंडली, बट वी हैव सीन हार्डली एनी डिसेबल्ड पर्सन बीइंग ट्रेवल्ड बाय दिस बसेज. देखा नहीं है कभी ट्रेवल करते हुए, बट दीज आर अवेलेबल. बसेस तो अवेलेबल हैं, बट बसेस का जो स्टॉप है वहाँ पे बस उस तरीके से खड़ी नहीं होती है जिस तरह से कि व्हीलचेयर भी अंदर आ सके. हो सकता है कि कोई व्हीलचेयर वाला खड़ा हो तो बस वाला ड्राइवर मे बी एबल टू टेक द बस नियर टू द बस स्टैंड सो दैट कि उसकी व्हीलचेयर अंदर आ सके, ऐसा हो सकता है. बट
मेरे देखने में तो ऐसा मैंने अभी नहीं देखा है कभी. So there is an availability in a bus ki there is a flat Space, sheet. yes, there Flat is. sheet is there which we can incline and Yes. over which the wheelchair can be climbed. बिल्कुल upon. बिल्कुल वो है So उसके BRT अंदर. buses. we can Nowadays available है उसके अंदर, but अभी still we need more awareness Advancement. which is to be created among the people. सबके अंदर आना चाहिए so that कि these are the things available and these are meant for these people only. तो ये सब चीज़ों के आप कई दफ़ा ट्रेन के डिब्बों पे रेलवे के अंदर देखते हैं, these are लिखा होता है डिसेबल्ड डिब्बा फॉर द डिसेबल्ड एंड यू विल फाइंड नो वन डिसेबल्ड, ऑल द एबल्ड पीपल आर रश्ड इनटू दैट. सो ये तो सब चीज़ें यू कैन सी दैट अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर. बाहर लिखा हुआ क्या है उसको उनको दे डोंट माइंड कि क्या लिखा हुआ है, बट दे कीप ऑन एंटरिंग. डिब्बा है उसके अंदर जगह है, एंटर कर जाओ. So these are the things that which we want to create awareness among the people. So with the time definitely efforts are on from the different people. बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और still the work is going on. So we can have this. So we have got another, अभी जैसे हम बात कर रहे थे motorized wheelchair की बात कर रहे थे. Motorized wheelchair जो है those are you can see in the slide different designs है motorized wheelchair के अंदर. heavy, light weight और heavy weight. पहले तो सिर्फ इंपोर्ट ही होते थे, ग्लोबली मिलती थी. अभी आज के टाइम में इन इंडिया देयर आर मैन्युफैक्चरर दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग एट द लो कॉस्ट. मीन्स इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर द इंडियन कम्युनिटी और द पीपल विद द लेस बजट दे कैन बाय ए मोटराइज व्हील चेयर विच कैन बी मेंटेन इन इंडिया एज वेल. सो एक बड़े अच्छी लाइट वेट मोटराइज व्हील चेयर इज़ अवेलेबल फॉर द मोबिलिटी इन द ऑफिस और इन द हाउस और नियर बाई एरियाज, क्योंकि इसके टायर वगैरह सब अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं सो दैट की कैन बी यूज फॉर दैट. ये चीज़ों के साथ में थोड़ा लाइफ हैज़ बिकम लिटिल बिट ईजियर फॉर द पीपल दोज हु आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग विद एनी ऑफ द एड्स. कोई भी तरह की एड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी इसके अंदर एक लाइफ की ईजीनेस दे कैन फील इट, दे कैन फील ईजियर देन द अर्लियर स्टेजेस ऑल्सो. सो इस तरह से मोटराइज व्हील चेयर हैं जिसकी इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस एज वेल, क्योंकि बैटरी भी इसकी ख़राब होती है टाइम टू टाइम. मोटर्स हैं लगी हुई हैं, वेयर एंड टीयर होगी इनकी, एवरीथिंग इज़ देयर. सो इन चीज़ों के साथ में व्हील चेयर्स आर देयर. बट दीज व्हील चेयर्स इधर इट्स ए मोटराइज और इट्स ए मैनुअल. दीज आर मेंट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेज और विद इन द हाउस और विद इन द ऑफिस और विद इन ए बिल्डिंग. सो दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया. वेर एज अ पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, दूर जाना चाहते हैं, सो उसके लिए मोटराइज व्हील चेयर इज़ नॉट वर्थ. इवन दो इसकी स्पीड 15-16-20 किलोमीटर तक होती है इसकी, बट स्टिल इट इज़ नॉट एडविजिबल टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकॉज इट हैज़ गॉट अ वेरी स्मॉल बेस. तो ये रोड के ऊपर चलने के लिए इतनी एडविजिबल नहीं है, रोड के ऊपर चलाना इतना ठीक नहीं है. तो उसके लिए वी हैव गॉट ए अनदर नाउ ट्राइसिकल्स फॉर द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी ऑफ द बोथ द लोअर लिम्स. उसके लिए भी the assessment of the person first, or then we have to assess which kind of the tricycle or the chair can be given. So उसके लिए क्या है, आप अगर next slide देखेंगे now you can see the person with the disability. इसका both the lower limbs are affected with the polio, with the long back, because उसकी age भी आप देखेंगे एक age है उसकी, और उसके साथ में देखेंगे उसके दोनों पैर, नीज भी कॉन्ट्रेक्चर में है, फुट भी उसके अफेक्टेड है. इसकी वजह से इसका अपर एक्सट्रीमिटी इज़ फाइन. दैट्स व्हाट वी हैव टू असेस. अगर ट्राइसिकल किसी पेशेंट को देनी है तो देन वी हैव टू सी वेदर ही इज़ एबल टू गो टू द ट्राइसिकल एंड सिट ऑन अ ट्राइसिकल एंड कम बैक टू द कम डाउन फ्रॉम द ट्राइसिकल. ये सब चीज़ें असेस करनी पड़ेंगी. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, उसके हाथों की स्ट्रेंथ कैसी है, वेदर यू विल बी एबल टू प्रोपेल द ट्राइसिकल, बिकॉज ट्राइसिकल का वेट है, उसका अपना वेट है. ऑल दिस ही शुड बी एबल टू प्रोपेल इट with the hand and should be able to manage with the other hand the steering of the tricycle, because he has to move the tricycle on the roads. अगर वो स्टेयरिंग नहीं संभाल सकता या ठीक से प्रोपेल नहीं कर सकता तो ही मे मेट विद एन एक्सीडेंट जो और भी उसको फर्दर उसको डिटेरिएट कर देगा. दैट इज़ नॉट गुड थिंग. सो वी वांट टू मेक हिम मोर कंफर्टेबल सो दैट ही शुड बी एबल टू वॉक विद द ट्राइसिकल कंफर्टेबली ऑन द रोड्स इटसेल्फ. तो ये सब चीज़ों का उसका असेसमेंट करनी पड़ती है. समटाइम्स the person using the crutches, means paraplegic cases, if they can walk with the crutches to the tricycle, then they can also use the tricycle. If they don't want to use the tricycle manually, they can have a motorized tricycle also, which is being run by the engine. इंजन लगा होता है उसके अंदर,
different kind of the scooters companies, they are making the tricycles for this purpose also, for the movement. And there are some long distances के लिए there are some sidecar scooters or scooter with the side wheels. These are available for the persons with the disability. Those upper extremity is good, but the lower extremity is affected. For long distance movement of the long distances, they can move with that. They are it's better for that. So they can use this motorized wheelchair or the scooters, or the nowadays cars are also available in the market which can be used for this purpose. Now there's we were talking about this slide. You can see that this is the sidecar with a scooter, and after that this is you can see the person mobility. You can see the mobility of this. We can see the video clipping of this mobility aid with an artificial leg. He's using an artificial leg, but still the mobility aid is required because his stump is very short, above knee short stump, needs a stability. So he's using on the that on the right side, normal side, not on the left side, which you asked me earlier also, because he's actually leaning on the right side, because more confident on the right side, on the normal side, he's more confident on that. That's why he's putting more weight on this, creating a base between leg and the step. आप देख रहे हैं अभी both the one artificial leg and the stick, both the things are on the ground, then he moves the normal leg forward. So this is the he's making a more stable अपना base बना रहा है, then only he has developed his pattern like this. So similarly we can have different type of the appliances, and along with this we can use the mobility aids which can help the persons with the different abilities to walk comfortably. Mobility will be better in way. So this teleconferencing we got to know about all the recent technologies and the recent mobility devices that we are available on the market for the disabled individual. So he can find himself self-dependent, and he can go for his work and do his day-to-day activities from his own. So crutches, canes, rollators for children, and there are wheelchairs for adults and children. So everything is the recent technologies, and also there are provided are the earlier devices that the patients used. So everything is helpful in nowadays. Definitely it is helpful, and it is better in design nowadays, better in quality nowadays. Qualities. The assessment, according to, also we got to know about the assessment that we need to make about the ability of the patient and ability of the mobility aid that we are using. So with this conversation, would like to thank Mr. Vijay Gulati sir for his valuable time that he spent with us and giving us the information about the mobility aids and the rehabilitation technologies we got to know. So all this is it is all about the mobility aids and rehabilitation aids. Yes, that's it. So prosthetic devices and orthotic devices also there that are being used. That's that what I can said be- here, that I have shown you some of the video clipping also with the artificial leg also, that one has to use this mobility aid like crutch or stick or the elbow crutch, different type of the sticks for their different reasons. So. different things, different purposes and different uses. So it's time to wrap up our teleconferencing. This is Shrijesh along with Mr. Vijay Gulati sir. I would like to thank you sir for the time you spent and the information you gave to us. So we'll meet for the next show in the same channel, RCI Navshika channel. Till then, take care. ला 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 कैसे बिता पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे. So in this episode of ours, we are going to have as our guest, guess who? एक दिन
आएगा प्यार हो जाएगा हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे. Yes, an eminent personality who has created a history of winning so many awards. And the list of the award goes as follows. Acharya Vinoba Bhave National Volunteer Award in 2001. National Award by the Honorable President of India in 2002. Kevin Care Ability Mastery Award in 2005. And Social Act of Bravery 13th Red and White Gold Bravery Award again in 2005. Yes, he's none other than Mr. Sanjeev Sachdeva, who is currently working as an employee in the Parliament House and has a distinction in winning awards by the eminent personalities in the category of Best Employee in the orthopedically disabled category. And he got his award from none other than the President of India by that time, who's Dr. APJ Abdul Kalam. Hello, and I welcome you, sir, in today's episode. Thank you very much. Thanks. So, sir, how come this unfortunate incident took place and when? And this thing started at 23. So I have seen best of both the worlds. I was physically fit, agile, used to go for trekking, loved everything what a person likes in their life, and used to roam around, did everything whatever you can think of. And all of a sudden, gradually there was some problem with my legs. I used to say call like that. Some weakening of muscles had started, and it was very difficult for me to grasp up with situation. बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि ये क्या हो रहा है. तो एक मन में एक टेंशन थी. I used to travel a lot. और एक foreign minister मेरे दादाजी मुझे करते थे. Then I became the home minister. So it was a very, very difficult and very, very tough time for me in those initial years. And then I met one person who was, in a worse condition than me. He was a quadriplegia, and when I met him, so I thought, ki when this person can fight it out, why can't I? The message is very simple, अगर ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना है या satisfy रखना है, तो अपने से नीचे और लोगों को देखिए जो लोग काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाते हैं. अगर अपने आप को अपनी क्षमताओं को जांचते हुए अगर आप सोचें कि मैं come in one's life, one should accept it, and only then he is able to plan and fight it out. And moreover, I'll use one word. It's a 2009. It's a world of marketing and packaging. How you present yourself, how you carry yourself, how you meet people, how you react, it all counts. Generally, people think कि disabled है तो